Okay, so the problem is a wheel rolls over the horizontal straight line part and covers 1980 mm distance in one rotation. Okay, anyone tell me what this value indicate? 1980 mm. Anyone? A wheel rolls over the horizontal straight line part and covers 1980 mm डिस्टेंस इन वन रोटेशन. ओके, जो एक व्हील है वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है? 1980 mm डिस्टेंस कवर करता है. मींस ये वैल्यू हमें किसकी वैल्यू दी गई है? स्ट्रेट लाइन पेरीमीटर. ओके, और if we talk about the cycloid curve, then its value, this value indicate for the directing line, length of directing line. Okay, that we find by using the equation of the perimeter 2 pi r or pi into d. Okay, so the value of perimeter or periphery of the wheel rolling circle is given 1980 mm. Okay, the problem we solved in previous lecture, in that the value of the diameter of the rolling circle is given. Okay, but here the length of the directing line is given. Okay, diameter or radius of the rolling circle is not given. Okay, we directly get the value of pi into d or 2 pi r. Okay, so first we find the value of radius or diameter of the rolling circle. Okay, so let's first find the value of radius or diameter. Okay, let's quickly find the value of diameter. Okay, and tell me what the value you get. First find the diameter of the rolling circle by using equation pi into d equal to 1980 mm. Okay, value of perimeter is given directly 1980 mm, and we know the equation. Okay, pi into d. So by using that equation, find the value of d, diameter of rolling circle. Okay, first find the value of diameter of the rolling circle. Just tell me what value you get. ओके, वैल्यू फाइंड कीजिए पहले डायमीटर का, और कितनी वैल्यू आती है वो मुझे जरा बताइए. Okay, we get the value small d equal to 630.25 mm. Okay, because 1980 mm. Okay, so we get the answer in unit mm. Okay, then draw the path trace by the point P, which is initially at the point of contact between the wheel and horizontal straight line. Okay, so it's a simple one wheel rolls on a straight path. Okay, so it's a problem of cycloid curve. In problem, there's not mentioned that problem is which type. Okay, it's not mentioned that it's a cycloid type, epicycloid or hypocycloid. Okay, but we decide that it's a problem of cycloid because one wheel is given and which move on a straight path. Okay, एक wheel दिया गया है जो straight path पे rotate roll करता है. Okay, इसलिए problem किसका हुआ? Cycloid curve का हुआ. Okay, और उसका हमने diameter find किया. Diameter d equal to 630.25 mm. Okay, means कितने सेंटीमीटर हो गए? 63 centimeter. Okay, I just avoid 0.25, so it's 630 mm. Okay, so 63 centimeter. Diameter of the rolling circle is 63 centimeter. Okay, so is it possible to draw with the same length on paper? ओके, ये एग्जिट लेंथ एग्जिट डायमीटर 63 सेंटीमीटर लेके हम अगर क्या ड्रॉ कर सकते हैं पेज पे जो आपकी स्केचबुक है उसमें? इज इट पॉसिबल और नॉट? हाँ, 63 सेंटीमीटर. इज इट पॉसिबल? Not possible. Okay, so here we are going for the scale. We already learned about the scale. Okay, so here if 630 mm is diameter of the rolling circle. Okay, so here I just take the scale 1 mm equal to 1 centimeter. Okay,
यहाँ पे जो 1 mm है वो क्या होगा 1 और 10 mm, 1 सेंटीमीटर ही हुआ, 10 mm मीन्स 1 सेंटीमीटर। ओके, अगर मैं यहाँ पे RF की वैल्यू फाइंड करूं, ओके, सो RF इक्वल टू, ओके, दिस इंडिकेट दी drawing length and this indicate the actual length. Okay, so RF is equal to D by A, 1 mm upon 1 centimeter. Okay, so here we get for RF unit must be same. Okay, so 1 mm upon 10 mm. Okay, so here we get RF equal to 1 as 10. Okay, so we just increase, reduce the length by 10. Okay, ratio of 10. Okay, so this step is important. Here we take the scale 1 mm represent 1 centimeter. अगर मैं यहाँ पे 1 mm की लाइन ड्रॉ करूं तो वो एक्चुअल में कितनी होगी, कितनी रिप्रेजेंट करेगी 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? यही स्टेप इंपॉर्टेंट है। ओके, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द सर्कल विथ 63 centimeter, okay, on the sketch, on the paper or your sketchbook. Okay, so here we take the scale that 1 mm equal to 1 centimeter और RF equal to 1 as 10. ओके, तो जो हमारा 63 कितना, पहला में कितना था 63 सेंटीमीटर, अब कितना हो गया? ओके, हियर एक्चुअल लेंथ इज 630. ओके, जस्ट राइट इट हियर, एक्चुअल लेंथ इक्वल टू 630.25 mm. Okay, means 63.025 centimeter. Okay, now we take the scale. So now drawing length equal to 6.3 centimeter or 63 mm. Okay, so now we are going to draw the circle with 63 mm diameter or 6.3 diameter. Okay, it is also, it's a diameter. Okay, so we are first find the value of radius first, and after that we are going for drawing the circle. Okay, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि ये हमने ये क्या किया है वो, ओके, क्योंकि ये स्टेप ही इंपॉर्टेंट है। बाद में आपको साइक्लॉइड कैसे ड्रॉ करना है वो तो आपको पता है। ओके, लेकिन ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 60 हमारी वैल्यू आ रही थी 63 सेंटीमीटर, ओके, 630 mm. ओके, सो इट्स नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग द सेम लेंथ ड्रॉइंग द सर्कल ऑन द पेपर और पेज. Okay, so here we take the scale 1 mm equal to 1 centimeter. मेरी ड्राइंग लेंथ 1 mm है, वो एक्चुअल में कितना रिप्रेजेंट करता है 1 सेंटीमीटर और 10 mm. Okay, so now our length change to 63 mm. Okay, we take the diameter of the rolling circle equal to 63 mm. अब हमें डायमीटर कितना लेना है 63 mm. ओके, ये सेम क्वेश्चन जीटीयू में 2 से 3 बार पूछा गया है, इसीलिए ओके, इसलिए मैं ये प्रॉब्लम आपको करा रहा हूँ. ओके, अदरवाइज वी ऑलरेडी कंप्लीट द ऑल टाइप्स ऑफ साइक्लॉइड कर्व. ओके, साइक्लॉइडल कर्व, सॉरी. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. नाउ वी टेक द डायमीटर इक्वल टू 63 mm. ओके, 63 mm डायमीटर लेके पहले हमें सर्कल बनाना है. स्टेप आपको पता है. ओके, सो जस्ट आई जस्ट गोइंग फॉर दैट. फर्स्ट आई ड्रॉ वन सर्कल with a 63 mm diameter. चलो सर्कल ड्रॉ कीजिए पहले. ड्रॉ वन सर्कल with 63 mm diameter. Okay, quickly draw one circle with 63 mm diameter. (63 mm diameter). Okay, 6.3 centimeter. Okay, so if you find the radius, then it's approximately about 3.15. Okay, 3.15. Okay, so take the radius equal to 3.15 centimeter. Okay, or 31.5 mm, and then find, sorry, not find, draw the circle. Okay, you not get exact value 31.5 or 3.15, but just take approximate value. You can measure 3.1 centimeter at least. Okay, then just take little bit more distance
and draw the circle by using that distance. Okay, quickly draw the circle. Then next step, okay, we all know that when we draw the circle in engineering graphics, next step is divide this circle into equal parts. Okay, so here I am dividing this circle into 8 equal parts. Okay, for that I draw one vertical line from the center and one horizontal line from the center. Okay, then I just take the protractor and measure angle 45 at here and 135 at here. Okay, after that I just connect this point and center. I draw one line which connect or which pass from this point and center. Okay, then another line which pass from this point and center. Okay, so in this way I divide this circle into 8 equal parts. Okay, 8 equal parts, so each part of 45-degree angle. चलो जिसको पता है स्टेप आगे करते जाइए, जिसको नहीं पता वो साथ में करते जाइए. Okay, first draw one circle with 6.3 centimeters diameter. Okay, so radius equal to 3.15 centimeter. Sorry. Okay, so by using this radius, draw one circle. Okay, then divide this circle into 8 equal parts. Okay, now next step, give the number. Okay, first this point come in contact with the directing line. Okay, so I just start from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay, now next step, divide, sorry, not divide, draw the line equal to directing line from point 8. Okay, जो ये 8 point है उसमें से मुझे एक line draw करनी है and length of this line equal to perimeter of this circle. Okay, and that value is already given in the question, which is length of directing line equal to 1980 mm. Okay, so here we reduce the scale. Okay, if I just find the value in centimeter, I write it here, L equal to 1980 mm. Okay, so if I find the value in centimeter, 198 centimeter. Okay, here, so this is the actual length. Okay, actual length, and now we are just finding drawing length. Okay, so here we take the we reduce the scale by 1 is 10. Okay, so instead of 198 centimeter, we draw the line with 19.8 centimeter or 198 mm. ओके, ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हमारी जो वैल्यू दी गई है एमएम में 1980 mm. ओके, अगर उसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो कितना आएगा 198. ये क्या है उसकी एक्चुअल लेंथ जो क्वेश्चन में दी गई है. ओके, हमने स्केल को रिड्यूस किया था इसलिए क्या आएगा 198 सेंटीमीटर की जगह पे कितने आ जाएगा 19.8 सेंटीमीटर. सो नाउ वी ड्रॉ द लाइन विथ 19.8 सेंटीमीटर. Okay, from point A. It's approximate about 20 centimeter.
Okay, but we can measure 19.8 centimeter by using this scale. Okay, so we not take directly 20 centimeter, measure this distance and draw the line with 19.8 centimeter. Okay, here I just write the value of LS, sorry, not LS, L, L equal to 198 mm. So I not write the unit. Okay, the next step, divide this line into 8 equal parts. Okay, because here we divide this rolling circle into 8 equal parts. Okay, so next step is divide this directing line into 8 equal parts. Okay, so for that, here I am drawing one line, okay, with 16 centimeter. 16 centimeter. Okay, draw one line with 16 centimeter. Now I divide this line into 8 equal parts. Length is 16 centimeter and I want to divide this into 8 equal parts. Okay, so it can easily divide with 2 centimeter of each part. Okay, 8. Okay, now I just connect this endpoint with this endpoint. Then draw the parallel line from parallel line to this line. Okay, so here I divide this directing line into 8 equal parts. Okay, now next step. Here I have center C0. Okay, so I am drawing the center line from C0. Okay, length is same, equal to directing line. Okay, now I divide this center line into 8 equal parts. For that, I just simply extend this line at here. Here I get center C1, here C2, C3, C4, C5, C6, C7 and C8 on center line. Okay. Now next step, draw the
horizontal line from all the point of the circle, rolling circle. Okay, rolling circle जितने भी point है उसमें से मुझे straight line draw कर, horizontal line draw करनी है. Okay, point 1 और 7 के लिए मुझे एक same line मिलेगी. ओके, 2 और 6 के लिए सेम ये सेंटर वाली लाइन है ये. ओके, ये सिर्फ साइक्लोइड का होगा तभी ये पॉसिबल है कि 2, 6 और C0 के लिए मुझे एक ही लाइन मिले. ओके, जब हम एपिसाइक्लोइड या हाइपोसाइक्लोइड ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए 2 और 6 के लिए सेम आर्क मिलेगी लेकिन C0 के लिए अलग आर्क मिलेगी. ओके, सो नाउ for 3 and 5 point I have same line, so I draw that line at here. Okay, now for 4 point I draw another line at here. Okay, now next, okay, I just start from here. My first point P0 at here, P0. Okay, when my circle is at center C0, okay, my starting point P0 at here, contact point. Okay, so and the radius. Now I just going to draw the different arc from different centers C1, C2, C3, C4, C5. For all that arc, radius is same. Radius equal to radius of the rolling circle. Okay, which is 3.15 or 31.5 mm. Okay, radius is fixed. Okay, I just measured the radius C0, P0, this distance which is 13.5 mm or 3.15 centimeter. Now I just change the center. Okay, change the center from C0 to C1. Okay, जिसको समझ में आ रहा है वो कीजिए आगे आगे. Okay, and when you complete it, just send a message in chat box. Okay, so center change from C0 to C1. Okay, I change the center from C0 to C1, radius equal to 331.5 mm. Okay, center is C1. So I draw the arc on the line which pass from one point. Okay, center is C1. So draw the arc on line which pass from one point. So this line. Okay, so here I get my second point P1. Okay, I start from P0, P1. Now I change the center from C1 to C2. जब ये मेरा सर्कल है रोलिंग सर्कल वो रोल करके C2 पे आएगा. ओके, तब ये पॉइंट P0 कहाँ पे होगा. ओके, फॉर दैट आई टेक C2 एज अ सेंटर, radius is fixed. Okay, and cut the line which pass from point number 2. Okay, here center is C2. हमारा सेंटर C2 है इसलिए कौन सी लाइन कट करनी है, जो ये 2 पॉइंट है हमारा उसमें से जो पास हो रही है मींस इट्स सेंटर लाइन. Okay, so I get another point at here P2. Okay, now I change the center from C2 to C3. Okay, radius is fixed, center is C3 and draw the arc. Center is C3, so cut the line which pass from point number 3 means this line. Okay, so here I get my third point P3. Okay, then change the center from C3 to C4. Okay, C4, radius is fixed, draw the arc. Okay, radius is 31.5 mm and this distance is also 31.5 mm. Okay, so here I get my P4 point. Okay, now I change the center from C4 to C5. Okay, I already complete my half cycloid curve. Okay, now I just change the center from C4 to C5. Radius is fixed, center is C5. So cut the line which pass from point number 5. Okay, center C5 है इसलिए जो 5 नंबर का पॉइंट है उसमें से लाइन पास हो रही है उसे कट करना है. Okay, so here I get my point P5. Okay, अब हमें जो दूर का पॉइंट है वो लेना है. Okay, अगर मैं C5 में से आर्क मारूंगा तो एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आर्क आएगा, लेकिन मुझे कौन सा पॉइंट लेना है, जो P4 से दूर है वो लेना है. ओके, अब तक C4 तक हम क्या करते थे, जो नजदीक के पॉइंट होते हैं वो लेते थे, लेकिन अब हमें क्या जो दूर का पॉइंट है वो लेना है. ओके, now I change the center from C5 to C6. Okay, center is C6, so cut the line which pass from point number 6 means this center line. Okay, so here I get my P6 point. Okay, now I change the center from C6 to C7. Okay, center is C7. Okay, so cut the line which pass from point number 7. Okay, so here I get my P7 point. Okay, now I just change the center from C7 to C8. Okay, here. Okay, this distance is equal to radius of the rolling circle. Okay, which is equal to 31.5. So I get exactly my point at here P8. Okay, as I told you that 3 point we directly get.
Okay, for starting point, end point, and center point at here. Okay, now I just simply connect all the point. You can use French curve also. Okay, very good. जिसका हो गया है. Okay, हो गए. Okay, so in this problem, the important step first, okay, finding the diameter or radius, because here the length of the directing line is given in the question. Okay, so first we need to find the diameter or radius of the rolling circle. Okay, after that we draw the rolling circle, but it's not possible to draw the circle or rolling circle by taking exactly the diameter. Okay, so for that we are just going for the change the scale. Okay, we take the scale with RF equal to 1 as 10, or we reduce the scale. Okay, we take 1 mm represent 1 centimeter in actual. Okay, so after that it's possible to draw the circle by using 3.15 centimeter as a radius. Okay, that step is important. After that it's just simple problem of cycloid curve. Okay, and this question is asked 2 to 3 times in GTU, so it's also important as for exam point of view. Okay, now I hope all of you completed this problem. हो गया है ना सबका? Okay, then we go for the next type of engineering curve, which is involute curve.
Okay, first just write down the definition of involute curve. ओके ये जो इनवॉल्यूट कर्व है उसकी डेफिनेशन पहले लिख लीजिए स्केच बुक में. ओके एंड यू नो नीड टू राइट दिस इन 6 mm. ओके जस्ट सिंपली राइट. Okay, rules of 6 mm is only for the seat. Okay, involute curve, it is constructed by the tracing the end point of string while it winding or unwinding on the polygon. Okay, polygon means we take triangle, square, pentagon, hexagon, any shape. Okay, in which all the sides are same. Okay, so this curve generate when we trace the end point of string, okay, while it winding or unwinding on the polygon. Okay, हो गया? Just write or take a screenshot. नॉटी है पीपीटी मारी પાસે પીપીટી ના લાઈન ની છે પોઈન્ટ. Okay, so let's start with involutes of polygon. Okay, as I told you, first we divide the chapter engineering curve into 4 parts. Okay, first one is conical section, then cycloidal curve, then involutes, okay, and last spiral. Okay, we already complete this portion. In cycloid curve there are 3 types: ellipse, parabola and hyperbola. Okay, in ellipse there are 4 methods. Okay, in parabola there are 3 methods I think. Okay, and hyperbola there are 2 methods. Okay, Akash sir already complete 3 methods in ellipse and 1 method in parabola I think. Okay, in ellipse we already complete rectangle method, concentric circle method and arc of circle method in ellipse. Okay, and in parabola I think Akash sir complete rectangle method. Okay, one more method is remaining in ellipse, which is focus and directrix method. Okay, but that method is same for ellipse, parabola and hyperbola. Okay, so we learn about that method at the end. Okay, because steps for that method is same for ellipse, parabola and hyperbola. Okay, so that method we learn at the end when completed all 3 types or all other methods. Okay, so in cycloid curve we already complete cycloid, epicycloid and hypocycloid. Okay, now we are going for the involutes. Okay, in involutes there are also, we divide this into 3 parts. Okay, involutes of polygon, involutes of circle, involutes of line. Okay, then we are going for the spiral. Okay, now today we are going for the involutes of polygon. Okay, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चलना चाहिए कि चैप्टर में चल क्या रहा है. Okay, मैं और आकाश सर दोनों एक ही चैप्टर चला रहे हैं लेकिन अलग अलग सेक्शन चला रहे हैं, इसीलिए. ओके, इतनी सारी हमारी मेथड हो गई है और ये अब ये बाकी है और इनवॉल्यूट्स बाकी है. इसमें आई थिंक हाइपरबोला और पैराबोला की 1-2 मेथड बाकी. Okay, so now go for the involutes of polygon. Okay, as you see the definition, okay, this curve generate. Okay, polygon means we include or we consider triangle, square, pentagon, hexagon. Okay, any shape which have same side. Okay, same length of side.
Okay, so I just start from this square. Okay, I just take one square of 25 mm साइड. ओके, जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है? 25 mm का एक स्क्वायर बनाया है मैंने यहाँ पे. I just take one square with 25 mm side. Okay, as you see in the definition, the curve generated or constructed when we trace the end point of the string. Okay, हमें एक स्ट्रिंग दी गई है जिसको हमें इसके ऊपर बाउंड करना है, बाइंड करना है. Okay, I just take one string at here. Okay, and it's completely bind on the square. Okay, here I have one question. If the length of the square is 25 mm, then how much length I need to completely bind it on this square? Okay, अगर मेरा यहाँ पे स्क्वायर है वो 25 mm का स्क्वायर है. ओके, और मुझे ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी चाहिए कि मैं कंप्लीटली इसके ऊपर बाउंड कर सकूं? कोई भी लेंथ बचनी नहीं चाहिए. तो कितनी होगी उसकी लेंथ? 100. Okay, very good. Okay, it's equal to the perimeter of the square. Okay, so if the side is 25 mm and we know the equation for the perimeter of the square equal to 4 into length. Okay, here we have 25 mm, so 4 into 25 equal to 100. Okay, so here I have string with a length of 100 mm. Okay, it's a very simple method. Okay, आप लोग ही कहेंगे कि ये तो बहुत ही सिंपल है. Okay, let's just see how the curve is generated. Okay, as we seen in the definition, the curve is generated when the end point of the string means this point. Okay, we just going to trace this point. हमें ये point को trace करना है. Okay, जैसे हमने साइक्लोइड कर्व में क्या देखा था, ये डायरेक्टिंग लाइन है, ये रोलिंग सर्कल है, तो उसका जो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसको हम ट्रेस करते गए थे और हमें ऐसा कर्व मिला था. ओके, तो यहाँ पे हमें कौन सा पॉइंट ट्रेस करना है, मींस कौन से पॉइंट को जॉइंट करना है. ओके, एट द एंड वी आर जस्ट गोइंग टू ट्रेस दिस पॉइंट. ओके, स्टार्ट फ्रॉम हियर P0. ओके, स्टार्ट फ्रॉम हियर. जब ये इस तरीके से जाएगी इस डायरेक्शन में और ये स्क्वायर है उसके ऊपर बाउंड होती जाएगी. ओके, तो जैसे जैसे बाउंड होगी उसकी लेंथ डिक्रीज होती जाएगी. ओके, तो जो मुझे एंड पॉइंट मिलेगा वो सारे पॉइंट को कनेक्ट करना है और उससे जो कर्व जनरेट होता है दैट नोन एज द इनवॉल्यूट. ओके, इनवॉल्यूट ऑफ स्क्वायर. यह हमने स्क्वायर शेप लिया है इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? इनवॉल्यूट ऑफ स्क्वायर. समझ में आ रहा है हमें क्या करना है? ओके, ये जो पॉइंट है P0 उसको हमें ट्रेस करना है. ये 25, इसका मतलब कि सारी साइड कितने की होगी? 25 की है. टोटल 100 mm. मैं ये लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं. 1 2 3. Okay, I give one number at here. 0 1 2 3 and 4. Okay, यहां से हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे भी मैं नंबर दे देता हूं 1 2 3 और 4. Okay, I just start from here. At the beginning my string is at here. Okay, at 0 point. स्टार्टिंग में क्या पे यहाँ पे अब मैं उसको इस पे बाउंड करना फाइंड करना स्टार्ट करता हूं. ओके, जब ये यहाँ आएगी तो ये टोटल लेंथ है उसमें से कितनी कम हो जाएगी? 25 mm. Okay, 25 mm decrease because this length is bound on this surface. Okay, so from 100 I just need to minus 25. Okay, because I also want to draw the remaining length at here. Okay, remaining length of the string at here. Okay, तो ये 100 mm है उसमें से 25 mm यहाँ पे बाइंड हो जाएगी. तो ये बाकी की लेंथ कितनी बचेगी? 75. Okay, it's not a rocket science, it's just a simple maths. Okay, हमें 100 में से 25 माइनस करना है. Okay, so I get my first point at here P1. Okay, after that I just continue to bind it on this square. Okay, so now from 75 another 25 is bound at here, so remaining is 50. Okay, 50. So here I get my second point P2. Okay, now 50 mm I just continue to winding it on the square. So from 50 25 mm again bind at here. Okay, so now the remaining is 25. Okay, so here I get my third point P3. Okay, now I just simply 25 mm length is remaining and this length is also 25 mm, so I get my last point at here P4. Okay, now I just simply connect all the points. Okay, you can connect by using the French curve or freehand, but here in this problem if you see carefully, if I take this point as a center, पहले इतना समझ में आ गया आपको?
ये P1 पॉइंट कैसे मिला, P2 पॉइंट कैसे मिला, P3 पॉइंट कैसे मिला और P4 कैसे मिला, वो फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे लेंथ कितनी है, 100 mm है, 100 mm की स्ट्रिंग है, उसको मुझे इसके स्क्वायर के ऊपर वाइंड करना है। ओके, तो जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो 100 में से 25 कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे वाइंड हो जाएगी, तो ये रिमेनिंग लेंथ कितनी बचेगी, 100 में से 25 माइनस करके तो 75। ओके, तो उसका जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट को ही हमें ट्रेस करना है। ओके, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पॉइंट आएगा P1, फिर से मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ वाइंड करना, तो 75 में से फिर से 25 यहाँ पे कम हो जाएगा। ओके, तो रिमेनिंग लेंथ 50 mm। ओके, सो हियर एंड ऑफ दिस थिंग आई गेट my second point P2. Okay, I continue winding this. So from 50 mm 25 again wind at here. Okay, so remaining is only 25, 25 plus 25 50 हो गया। ओके, और अब 25 ही लेंथ बची है और यह स्क्वायर का भी कितनी लेंथ है 25, तो उसको डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सॉरी आई गेट माय P4 पॉइंट एट हियर। ओके, नाउ for drawing the involutes. Okay, if here you seen carefully, okay, this length is 100 mm. Okay, this length is 75 plus 25, ये 25 है, तो कितना हो गया 100 हो गया। So I use O as a center. Okay, so if I use O as a center and 100 mm as a radius, it's possible to draw the सर्कल और आर्क हियर बाय यूजिंग दी कंपास। ओके, हम कंपास का यूज करके यहाँ पे ये आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इसके लिए हमें फ्रेंच कर्व की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये लेंथ भी 100 mm है और ये लेंथ भी 100 mm, लेकिन यहाँ पे हमें सेंटर कौन सा लेना पड़ेगा, ये 0 वाला है वो लेना पड़ेगा, तभी होगा ना 100 और 25 प्लस 75 मीन्स 100 हो गया। समझ में आ रहा है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको सेंटर लू 1 पॉइंट को, ये टोटल लेंथ कितनी है 75, ये कितनी है 50 प्लस 25 हो गया 75, तो मैं 1 को सेंटर ले सकता हूं, 1 सेंटर एंड 75 एम रेडियस। सो आई आल्सो ड्रॉ दिस आर्क बाय यूजिंग द कंपास। Okay, so you get the smooth curve. Okay, no need to connect by freehand. Okay, now I take 2 as a center. Okay, this length is 50 mm, here 25 plus 25 50 हो गया, तो ये भी हो जाएगा कनेक्ट। एंड लास्ट आई टेक 3 as a center, 25 25। ओके, है ना सिंपल मेथड। ओके, इट्स वेरी सिंपल मेथड। ओके, so in this way we draw the involutes of polygon. Okay, so first we start with one problem, so just write down। पहले समझ में आ गया, यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो आप, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना। ओके, अब आपको ड्रॉ करना है। ओके, जस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन। Draw the involutes for square with 25 mm side. Okay, question लिख लीजिए पहला। Just write the question in your sketchbook. Quickly write this question in your sketchbook. And who already completed, just draw one circle with 25 mm side. ओके, मैंने आपको दिखाया कि कैसा आपका कर्व मिलेगा, तो उस हिसाब से आप स्क्वायर बनाइएगा। ओके, स्पेस उस हिसाब से आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। ओके, we need more space on right hand side and above the square. Okay, so draw your curve, sorry not curve, square. Okay, now first step, draw the square with 25 mm side. ओके, 25 mm का स्क्वायर बनाना। ये अगर मेरा पेज है तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मुझे नीचे भी थोड़ी 25 mm जितनी स्पेस चाहिए। ओके, मेनली स्पेस मुझे राइट हैंड साइड और टॉप पे चाहिए। ओके, सो हियर आई ड्रॉ वन स्क्वायर विथ 25, फॉर दैट आई ड्रॉ वन लाइन एट हियर विथ 25 mm. ओके, ड्रॉ वन लाइन विथ 25 mm. ओके, देन बाय यूजिंग द सेट स्क्वायर। ओके, सिंपल आपको सेट स्क्वायर यूज करना है। स्क्वायर और रेक्टेंगल बनाने के यहाँ पे मेरा सेट स्क्वायर रखूंगा और कितना मेजर करना है 25।
Okay, then by using this set square I draw third line, and after that I just connect two endpoint. Okay, so in this way I draw one square with 25 inside. Okay, and I just give the name 0 1 2 3. ओके, नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, PQRS ABCD, आपको जो नेम देना है वो आप दे सकते हैं. Okay, so first make one square and give the name to all 4 points 0 1 2 3. Also we get 4 at here 0. Done. Now next draw the line from 0 with length equal to 100 mm. Okay, why 100 mm? Because here we have square with 25 mm. Okay, so we just take the length equal to perimeter of the square, which is 25. I here write 25 into 4 equal to 100. Okay, now next step, I divide this 100 mm line into 4 equal part. Okay, 25, 1, 2, 3 and 4. Okay, I also give name at here 1, 2, 3, 4. हो गया? ओके, समझ में आ गया तो आप आगे आगे कर सकते हो. And whenever you complete, just send a message in chat box. Okay, now I just start to winding this string in this direction. Okay, so first this part 0 to 1 wind on this surface of 25 mm. Okay, so now from point 1, okay, from point 1 this length equal to 75 mm, because from 100 mm 25 mm is wind on this surface. Okay, so from one point I draw one vertical line. Okay, or I just extend this line 0 1, I just extend this line with 75 mm length. Okay, so here I get my first point P1. ओके, यहाँ पे ध्यान रखिए गया, ये मैंने 0 1 वाली लाइन को एक्सटेंड किया था, ऐसे नहीं ड्रॉ करनी है. ओके, स्टूडेंट मेक्स मिस्टेक एट हियर, दे जस्ट ड्रॉ लाइन एट हियर. ओके, वी वांट टू ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट 1. ओके, बट जस्ट सिंपली ड्रॉ इन दिस डायरेक्शन. ओके, 0 1 वाली लाइन है, उसी को मैंने एक्सटेंड किया है. ओके, लेंथ ऑफ दिस इक्वल टू 75. Okay, now from 75 25 mm again wind at here. So from 2 point I draw one line at here with 50 mm. Okay, length of this line equal to 50 mm, because from 75 mm 25 wounded here, so 75 minus 25, so here I draw one line with 50 mm length. Okay, as here you seen that from 2 I just extend this line. Okay, 1 2 line for 50 mm. So here I get my second point P2. Okay, now I continue winding this onto the square. Okay, so from 50 25 again wind on this surface. Okay, 25 mm यहाँ पे wind हो जाएगा, तभी 50 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 25. So from 3 point I extend the line with 25 mm length. Okay, so here I get my third point P3. Okay, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 3 पॉइंट जो 2 3 वाली लाइन है उसी को मैंने एक्सटेंड किया था, ऐसे नहीं ड्रॉ करनी है.
ओके पिछला पॉइंट है उसमें से स्ट्रेट लाइन ऊपर एक्सटेंड करनी है, ये 1 में से तो 0 1 वाली लाइन को एक्सटेंड करना है, 2 है तो 1 2 वाली लाइन को एक्सटेंड करना है, 3 है तो 2 3 वाली लाइन को एक्सटेंड करना है. Okay, now 25 mm length is remaining and here also 25 mm side, so we get my final point P4 at here, P4. Okay, now I just simply connect all the point by using the compass. Okay, for first 100 mm length, okay, I just take O as a center. Okay, O को center लेना है, यहाँ पे मेरा compass होगा और pencil कहाँ पे होगी 4 पे. Take O as a center and 100 mm as a radius. Draw the arc. Okay, now for another arc I just take 1 as a center, पहले 0 लिया था, अब 1, take 1 as a center, 75 as a radius. Why 75? Because this length is 75, this 50 plus 25 is also 75, so I just take 1 as a center and 75 mm as a radius. I connect P2 and P3. Okay, now I just change the center, take C2 as a center and radius equal to 50 mm, here 50 mm, here 25 plus 25 50, so I take 2 as a center and continue arc from here. जहां से बाकी है वहां से मुझे आगे बढ़ना है, ऐसा याद रखने का. Okay, now I just take 3 as a center and radius equal to 25. So in this way I complete the involutes of square. Okay, just quickly complete up to this. Okay, this is the first problem, so we just wait for other student also. Okay, I just give you 2 minutes. Okay, complete this in 2 minutes. Okay, whenever you complete, just send a message.
Okay, now next we are going to draw the normal and tangent. Okay, at any point on the curve, it's also very simple to draw normal and tangent in involutes. Okay, so here no condition is given, so I just take any random point at here. Okay, I take one point at here, I give the name A. Okay, I want to draw normal and tangent from this point. Okay, so listen carefully. Okay, for drawing the normal and tangent. Okay, first I just draw the normal. Okay, for drawing the normal, okay, it's very simple. I just need to connect point A, okay, with the center. Okay, listen carefully. I just connect A with the center which I used to draw this arc. Are you getting? Okay. For drawing the normal, I just connect point A with the center which I used for drawing this arc. Okay, ये आर्क ड्रॉ करने के लिए मैंने जिसको सेंटर पॉइंट यूज किया, जो सेंटर पॉइंट यूज किया था उसके साथ मुझे ए को कनेक्ट करना है. ओके, और वो पॉइंट और ए में से जो पास होती है ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो हो जाएगा मेरा नॉर्मल. ओके, दैट लाइन नोन एज अ नॉर्मल. 40 तो कौन सा पॉइंट होगा? ये आर्क ड्रॉ करने के लिए मैंने कौन सा पॉइंट यूज किया था? सेंटर. किसको सेंटर यूज किया था? ये जो हमने कंपास से ड्रॉ किया था, पीआर P1 वाला, P1 P0 वाला, उसके लिए ये हमें किस पॉइंट को सेंटर करके यूज किया था? O point. Okay, so 0, sorry, this point. Okay, just simply connect A with 0. Okay, so this line is normal for the involutes. Okay, and normal and tangent both are perpendicular to each other. So I draw one perpendicular line to this normal at here by using the set square. Okay, I just put my set square at here. So here I'm just extending this line. So this line give me the tangent. This line are perpendicular. Okay, so it's very simple to draw the normal and tangent. Quickly draw the normal and tangent. Okay, if I take my point at here, okay, B. Okay, then I need to connect B with which point? किसके साथ कनेक्ट करना होगा B को? अगर मुझे B पॉइंट है वहां पे अगर ड्रॉ करना है नॉर्मल एंड टेंजेंट. ओके, वेरी गुड. वन पॉइंट के साथ this point, because for drawing this arc I use one as a center, so I just simply connect B with one. So this line give me the normal, and I draw one perpendicular line to this which give me the tangent. Okay, quickly complete this. So after that we are going for the next problem. Okay, write down the second problem.
Okay, problem is draw the involutes for polygon with 30 mm side. Okay, full stop. Draw the normal and tangent at any point on the curve. Okay, instead of square here we have pentagon with 30 mm side. Okay, so first we are drawing the pentagon at here. Okay, for drawing the pentagon, we use the method that we use in first chapter. Okay, ऐसा ही करना पड़ेगा ना, वो मेथड यूज करनी पड़ेगी ना यार पेंटागन ड्रॉ करने के लिए. Okay, we are not using that method because it's very time consuming. Okay, so let's quickly see how to draw the pentagon. Okay, pentagon कैसे ड्रॉ करते हैं. Okay, pentagon में हमें पता है अगर टोटल एंगल 360 होगा. ओके, पेंटागन में टोटल एंगल कितने हो गए अगर मैं पेंटागन ड्रॉ करूं तो 5 एंगल हो गए. ओके, सो ईच एंगल, ओके वी नो दैट इन पॉलीगॉन साइड लेंथ ऑफ द साइड एंड एंगल्स आर सेम. ओके, so here if we have same similar 5 angle then we have each angle of 72 degree in polygon. Okay, polygon में सभी एंगल कितने के आएंगे 72 के आएंगे. Okay, so by using this angle, first we construct the polygon. Sorry, not polygon, pentagon. Sorry. Okay, so here side of the pentagon is given 30 mm. So first I draw one line with 30 mm. Okay, then I see that the angle is 72. Okay, so from here I measure 72 degree. I measure angle 72 by using the protractor. Okay, and draw one line with 30 mm length. Okay, पहले बोर्ड पे देख लीजिए, बाद में ड्रॉ करना. ओके, ये फर्स्ट मैंने 30 mm की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, फिर यहाँ पे मैंने कितना एंगल मेजर किया 72. Why 72? Because in pentagon all the angle is 72 degree. Okay, so here I just measure 72 and draw one line with 30 mm. Okay, after that from this point, okay, here I measure 72 angle 72 degree and draw another line with 30 mm side. ओके, यहाँ पे कितना 72 मेजर करना है 72 और एक लाइन ड्रॉ करनी है विथ 30 mm साइड. Okay, so in pentagon there are 5 points. Okay, from 5 I get 1, 2, 3 and 4. Now just only one point is remaining. Okay, for that I measure 30 mm. Okay, first I use this point as a center and draw one arc at here. Okay, now use this point as a center, radius is fixed 30 mm. Okay, and draw arc which cut this arc at here. So here I get my 5th point. Okay, so I just simply connect. फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, पहले हमने यहाँ पे 30 mm की एक लाइन ड्रॉ की है. ओके, फिर यहाँ पे 72 का एंगल मेजर करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है. लेंथ ऑफ दिस लाइन इक्वल टू 30 mm because it's given in question. Draw the pentagon with 30 mm side. Okay, now here I have 4.1, 2, 3, 4. Just one point is remaining. एक ही पॉइंट बाकी है. ओके, तो उसके लिए 30 mm रेडियस लूंगा. यहाँ पे सेंटर, इस पॉइंट का सेंटर लूंगा और फिर एक आर्क ड्रॉ करूंगा एट हियर. ओके, उतनी ही रेडियस लेके अब सेंटर यहाँ पे आएगा और एक आर्क ड्रॉ करूंगा जो अगली वाली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पे. तो यहाँ पे मुझे मेरा 5th पॉइंट मिल जाएगा. नाउ आई जस्ट सिंपली कनेक्ट. ओके, सो इन दिस वे आई draw the pentagon with 30 mm side. ओके, तो इस तरीके से हमें पेंटागन ड्रॉ करना है. आगे जब हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ेंगे तब भी पेंटागन आएगा.
तो इस मेथड से हमें ड्रॉ करना है। अगर इसके अलावा आपको कोई और मेथड आती है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। आई जस्ट नीड पेंटागन एट हियर। ओके, यू कैन यूज एनी मेथड। ओके, कोई भी मेथड यूज करके आपको पेंटागन बनाना है। इसके ये तो मैंने एक बताई, इसके अलावा अगर आपको कोई भी मेथड आती है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे पेंटागन चाहिए मुझे। डन, कंप्लीट फर्स्ट दिस रोटी पेंटागन विथ 30 mm साइड। Okay, now what the length I need for completely winding the string on this pentagon. Okay, जो string है उसकी लेंथ कितनी चाहिए कि जिससे इसकी वजह ये completely इसके ऊपर वाइंड हो जाए? कितनी लेंथ चाहिए? 150. Okay, very good. Okay, why 150? Here we have 5 sides. Okay, each side of 30 mm, so 30 into 5, so equal to 150. Very good. Okay, just give the number 0, 0, 1, 2, 3, 4, and 5 at here. Okay, so here I have 2 points, 0 and 5. Okay, first draw the pentagon with 30 mm side. ओके, यहाँ पे 30 mm की लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल, फिर यहाँ पे 72 एंगल मेजर करना है, यहाँ पे 72 एंगल मेजर करना है, और ये दो लाइन ड्रॉ करनी है 30 mm साइड की। फिर 30 mm रेडियस लेना है, एक बार इस पॉइंट से आर्क मारना है और एक बार इस पॉइंट से आर्क ड्रॉ करनी है। सो व्हेन दिस टू आर्क इंटरसेक्ट आई गेट माय फिफ्थ पॉइंट। Okay, because we already have 4.1, 2, 3, and 4. I just need to find last fifth point. Okay, so in this way, I find my fifth point. Now I just simply connect this point with this point and this with this. Okay, so in this way, I do the pentagon. Okay, now next step, as we done in square. Okay, similar that we are starting from here. Okay, first I draw the string. Okay, with length equal to 150. Okay, so from 0 I draw one horizontal line with length equal to 150. Okay, here I write the length of the string in this way, 30 into 5 equal to 150. Okay, you can also directly write 150. Okay, but I just write in this way, 30 into 5. Now next step, divide this line into 5 equal parts. Okay, 150, so 5 each side of 30 mm. Just measure 30 mm and make the arc, or directly measure 30, 30, 60, 90, 120, and 150. Okay, I give name 1, 2, 3, 4, and 5. Now I just start winding from here. Okay, here I have my first point P0 at here. Okay, I just winding in this direction. Okay, so first when I wind up to this point, okay, 30 mm is consuming at here. Okay, so from 150 we just minus 30 mm, so remaining is 120. So from one point, okay, I draw this string with 120 mm, but in which direction? Okay, in this direction. I just extend this line 0, 1. Okay, as I similar I told you in square. Okay, I'm not drawing in this direction. Okay, I am string is binding in this direction,
So I just extend this 0 1 line from here. Okay, and length of this line equal to 120. Okay, why 120? We just minus 30 mm from 150. Okay, so this length of this string is 120, and here I get my first point P1. Okay, now I continue winding this string onto the pentagon. Okay, so from 120, 30 m again wind at here. Okay, so from 120 I just minus 30. Okay, so remaining is 90 mm. Okay, but here I am drawing in this direction. Okay, I just extending this 1 2 line. Okay, ये अच्छी तरीके से समझेगा, ये इस डायरेक्शन में मुझे ड्रॉ करनी है, ऐसे नहीं ड्रॉ करनी. ओके, तो और ये ऐसे भी नहीं ड्रॉ करनी है, ये 1 2 वाली लाइन है उसे मुझे यहाँ पे एक्सटेंड करनी है, और उसकी लेंथ कितनी आएगी 120 minus 30, so 90, and here I get my third point P3, sorry, second point P2, sorry. Okay, now I just continue winding this string. Okay, so from 90, 30 m again winding at here. Okay, so remaining is 60 mm. So from 3 I just extending 2 3 line from here. Okay, so here I get my third point P3, and length of this line equal to 60. 90 minus 30 equal to 60. Okay, now I continue winding this string onto the pentagon. Okay, so from 60 mm, 30 m again wind at here. So the remaining is just 30 mm. So here I get my fourth point P4. Okay, and length of this string equal to 30 mm. Now length of this string is 30 mm and last side is 30 mm. So I get my final P5 point at here. P5. Okay, now I just simply connect all the points. Okay, similarly to the square. Okay, here if you see carefully, first I start from 0. समझ में आ रहा है ना? Okay, if you have any doubt or query, then just tell me. Okay, जैसे हमने स्क्वायर में किया था, here if you see carefully, this length is 150, and here if you measure 120 plus 30, 150. So I take O as a center and 150 mm as a radius. Okay, so here I get this arc. Okay, now similarly after 0 I take 1 as a center, so this length is 120. In here if I measure 90 plus 30, 120. So now I take 1 as a center and draw one arc, or I just simply connect P1 with P2. Okay, now I come to point 2. Here length is 90 m and here 60 plus 30, so 90. Now I just take 2 as a center and connect P2 and P3. Okay, now I change the center 2 to 3. Okay, here land is 60 m and here 30 plus 30, 60. So I just take 3 as a center and 60 m as a radius. I connect P3 and P4 right here. Okay, now I just change the center from 3 to 4. I use 4 as the center. This length is 30 m, this length is also 30 m. So I just draw last part of the involute curve. Okay, very good, Dinal. Okay, here we use same step for normal and tangent. Okay, so draw the normal and tangent. Take
any point between P1 and P0 at here, okay, and start to drawing normal and tangent. Okay, steps are similar to the square. Okay, take any random point between P0 and P1 and draw normal and tangent to the involutes curve. From point, I just give the name A. Okay, steps are similar. Here, I want to draw normal and tangent from point A. Okay, so I just simply connect A point with the point which I use as a center for drawing this arc. Okay, because my point A is between P1 and P0. Okay, so I use 0 as a center for drawing this arc. Okay, so I just simply connect A with 0. Okay, so this line is normal. Now I draw perpendicular line to this line, which give me the tangent. Okay, you can also choose any point on this curve and draw normal and tangent at that point. Okay, you choose at here. Okay, for drawing this arc, I use 2 as a center, so I just connect B with 2 point. Okay, so this line give me the normal. Okay, and perpendicular line to this line give me the tangent. Okay, so quickly complete this problem. After that, we are going for the last problem. Okay, last problem, we are going for the hexagon. Okay, I complete just half problem and give it for the homework. Okay, I just show you how to draw the hexagon. Okay, then you complete whole problem by yourself. Okay, I think now you understand the method. Okay, मेथड आपको समझ में आ गई होगी. सिमिलरली जैसे हमने स्क्वायर में किया, पेंटागन में किया, वैसा ही करना है हेक्सागन में. ओके, चलो हो गया या इतना? Okay, just write down this question. Draw the involutes for hexagon with 25 mm side. Draw normal and tangent at any point on the curve. Okay, let's see first how to draw the hexagon. Okay, चलो जिसका बाकी है वो भी ऊपर ध्यान दीजिए. ओके, हेक्सागोन कैसे ड्रॉ करते हैं. ओके, पहले तो हम हेक्सागोन के टाइप पढ़ेंगे. ओके, हेक्सागोन रेस्टिंग बाय टू वे. ओके, फर्स्ट रेस्टिंग ऑन साइड. रेस्टिंग ऑन साइड मींस इट्स साइड ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड. ओके, ये लेफ्ट और राइट साइड पे उसकी क्या आएगी, साइड आएगी. ओके, इट्स नोन एज रेस्टिंग ऑन साइड.
ऐसे हेक्सागोन आता है। ओके, ये हेक्सागोन के लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, ओके, लेफ्ट और राइट में क्या है, उसकी साइड है। ओके, सो इसे कहते हैं रेस्टिंग ऑन साइड, रेस्टिंग ऑन साइड। ये जो साइड है उसके ऊपर हेक्सागोन को रखा गया है। ओके, अनदर टाइप इज रेस्टिंग ऑन कॉर्नर, रेस्टिंग ऑन कॉर्नर। ओके, तो हमें कौन सा हेक्सागोन ड्रॉ करना है वो पहले डिसाइड करना पड़ेगा। रेस्टिंग ऑन कॉर्नर मीन्स इट्स कॉर्नर इज ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड, लेफ्ट or right side, not left and right, but left or right side. Okay, so here if you see that its corner is on left and right side. Okay, so it's known as resting on corner. Okay, if its side is resting on left and right side, then it's known as resting on side. Okay, अगर उसकी साइड लेफ्ट और राइट साइड पे होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्टिंग ऑन साइड। अगर उसकी कॉर्नर होगी लेफ्ट और राइट में तो उसे क्या बोलेंगे, रेस्टिंग ऑन कॉर्नर। Okay, clear this? Okay, so first let's see how to draw the hexagon when it resting on side. Okay, for example here I am going to, ऊपर देखिए, बाद में मैं आपको टाइम दूंगा कैसे ड्रॉ करना है। ओके, हियर आई एम ड्राइंग द हेक्सागोन विद 25 mm साइड। ओके, 25 mm साइड का मुझे हेक्सागोन बनाना है। ओके, सो हियर फर्स्ट आई ड्रॉ वन सर्कल with 25 mm as a radius. By taking 25 mm as a radius, and I draw one circle. ओके, 25 mm रेडियस लेके मुझे एक सर्कल बनाना है। 25 mm रेडियस है इसलिए डायमीटर कितना आएगा, 50 mm। सिमिलरली फॉर दिस, हियर आई एम ड्राइंग द सर्कल विथ सेम 25 mm साइड, r equal to 25. Okay, now for drawing this circle, okay, drawing this circle, okay, here you see that the corner in vertical side. Okay, so from here, from center, I draw one vertical line at here. Okay, here two corners in vertical direction, so here from I just draw one vertical line. For hexagon I have 6 point in hexagon, 1 2 3 4 up to 6. Okay, so from 6 point I get my 2 point, 1 point at here and 1 point at here. Okay, now just 4 point remaining. For that, okay, I know the length is 25 mm. Okay, so I take 25 mm as a radius. Okay, first I use this point as the center and draw one arc on this side and one arc on this side on the circle. Okay, now similar radius 25 mm. Now I use this point as a center, draw one arc on this side and one arc on this side. Okay, so here you see that 1 2 3 4, I get my remaining 4 points. Now just simply connect all the points. Okay, so in this way I draw the hexagon. ओके, लेकिन हमें जो प्रॉब्लम है, आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो, ये भी राइट ही है, लेकिन हम ये वाला ड्रॉ करेंगे। ओके, किस में, जो हमें प्रॉब्लम दिया गया है उसमें। ओके, सो फॉर दैट हियर यू सी दैट कॉर्नर इन हॉरिजॉन्टल direction, so from center I draw one horizontal line at here. Okay, so I get my 2 point, one at here and one at here. Okay, so now I just use this point as a center and radius equal to 25 mm because each side had 25 mm length. Okay, so I just take radius equal to 25 mm, this point as a center, draw one arc on this side and one arc on this side. Now use this point as a center, draw one arc on this side and one arc on this side. Now just simply connect all the points. Okay, so in this way I draw the hexagon. Okay, so first draw the hexagon, quickly draw this hexagon and solve this problem by yourself. ओके, ये आपको होमवर्क में प्रॉब्लम दिया गया। अगर ये मेथड में अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, ये प्रॉब्लम आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ओके, जस्ट टेल मी व्हाट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फॉर दिस प्रॉब्लम। लेंथ कितनी आएगी स्ट्रिंग की? 150. Okay, very good. 25 mm each side
25 into 6, so equal to 1. Okay, so first draw the hexagon and complete this problem by yourself. Okay, in next lecture we just start from here. Okay, I quickly solve this problem, so you just check at that time. Okay.